Now you try this question. Find the possible combination of x plus y. Divide everything by the smallest coefficient. So 80 by 55y, 55 by 55x is equal to 710 by 55. 55 by 55 x is पूरा coefficient पूरा integer रहेगा. इनमें से extra part which you will get is 25 by 55 y, and same here, from this I'll get some part is equal to 50 by 55 plus k, which means y will be 50 plus 55k divided by 25. That's my first part. If you have got this value equation, now x and y will be easy to find. Find the first value of k will be how much? 0. If I put k is equal to 0, I'll get my first value of x and y. X की value कितना आ गया? 2. If I put x equal to 2 here, I'm getting the value of y as 10. The first combination which I'm getting is put k equal to 0, y x is 2 and y is 10. Y is 2 and x is 10. The second combination I'll get, we told earlier कि put x equal to 25. No, x is equal to 25 or any multiple of 25 as well. So I'll put k equal to 5 now. If I put k is equal to 5, y will be 11 plus 2. If I put k equal to 5 here, 11 plus 2 is 13. Y is 13. If I put 13 here, this will be more than 10. So only possible combination is 2 and 10. Alright, now let me give you a shortcut where you don't need to calculate any of these things. You can solve every question within 10 seconds. अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो फाइन. दैट्स व्हाई गिवन यू दिस एग्जांपल एज वेल टू मेक एक्सप्लेन यू कि अगर करना पड़ा तो ऑब्वियसली यू कैन डू इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट 90% of the case you will not get the chance to solve this thing. Alright, so in this case there is only one combination, 5, 2 and 11. Alright, let's pick up 3 examples. अभी वाला केस का what was the question? 55x plus 80y is equal to 710. उसका पहला क्वेश्चन क्या था? 17x plus 10y. Fine. So these are the 5 questions which are there. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Let's pick up one by. This is the first question we did. 2 coin wala and 3 coin wala. Fine. First of all, the moment you get a question, पहली बात check out के इसमें common fraction है कि नहीं, common factor है कि नहीं. 2, 3 and 14. Is there any 2 factors common? Yes. 2 and 14 are common. इसका मतलब, if I took up the first example here, 2x plus 3y is 14. This means if 2 terms are even number, this term have to be even number. Yes. Y की value have to be even number. So y की first value will be 0, जहाँ पे आंसर आएगा. Second value will be 2, third value will be 4, 6, 8, 10, 14, everything. What I'm doing is I'm finding out the factors. ठीक है. 0 पे is not defined. पहले अपने केस किया. There have to be some 2 rupee coin and 3 rupee coins. So first combination was y equal to 2. Second combination y equal to 4. अगर y 6 डाला तो ये तो 3 into 6 18 हो गया, which is more than 14. So there are only 2 possible cases, 4, 2 and 4. How much time? 5 seconds. 10 seconds to solve the question. But there have to be a factor common. Can you try number 2 question? 3x plus 5y is 20. 5 common आ गया. So मतलब x की value have to be a multiple of 5. First possible value of x 0, 5, 10, 15, so on till the time it is between the range. Are you getting me? Yes. Third case, 3x plus 4y equal to 15. Now value of 4, y have to be 0 or a multiple of 3. 0, 3, 6, 9, all these things. Case number 4 में I can reduce by 5 first. So this is coming out to be 11x plus 16y is equal to divide by 5 या 142. अब इसमें कुछ नहीं आ रहा. ठीक है. So in this case we have to use the normal method.
लेट्स लुक एट लास्ट वाला केस. इसमें क्या करोगे? इसमें अगेन देयर इज नो कॉमन फ्रैक्शन, बट शी फाइंड आउट वन रूल इन दैट. इधर क्या है 7, इधर क्या है 7, यहाँ पे आ गया 0. दिस नंबर लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 0. ठीक है, इसका टेंशन नहीं है. तो टेंशन इज ओनली फॉर दिस पर्सन. 7 आई वॉन्ट लास्ट में 7. द फर्स्ट वैल्यू विच विल गिव मी 7, द लास्ट विल बी 1. put x equal to 1, I'll get 7. Next value will be 11. 11 to 17, लास्ट में 7 आएगा. नेक्स्ट वैल्यू विल बी 11 का 21. तो 1, 11, 21, ऑल दिस वैल्यूज विल गिव मी लास्ट में 7. सो दीज आर द शॉर्टकट विच यू हैव टू इनोवेट. ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा. ठीक है, वन मेथड वॉज अ फैक्टर वाला मेथड. फटाफट फैक्टर कॉमन आ गया, फिनिश. कैट में दे आर नॉट गिविंग यू एनी क्वेश्चन इन विच कैलकुलेशन इन्वॉल्व. देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड द कैलकुलेशन. देयर ऑब्जेक्टिव इज आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग एंड आर यू एबल टू सॉल्व. दैट इज द मेन थिंग दे आर गोइंग टू चेक. तो उसके लिए डोंट एक्सपेक्ट टू हैवी कैलकुलेशन जो अपन ने किया. आई गेव यू द कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल टू मेक यू सॉल्व दोज क्वेश्चन. आना चाहिए वो. इन केस लाइक दिस क्वेश्चन, if you're not able to solve, then obviously we have to use calculations. Fine, but obviously 70% of the cases you can do shortcut. ठीक है, ये shortcut क्या था आया लास्ट वाला shortcut 17x plus 10y 207. लास्ट में this last digit will always be 0 for the part number 2. This is 7, this is 7. लास्ट में हमेशा 7 आना चाहिए. The first number which will give me a 7 is 1, x is 1. Next number will be 11, next one will be 21, 31, 41, so on. 21 into 17 will be more than 200. तो ये निकल गया. तो possible combination 1 and 11, दो बचा. Alright, so there are two possible cases. Alright. Again, one easy question. There are two kind of species, 3-fingered and 5-fingered. Total is 20. You can solve the question. फटाफट डाल के. I can use now. The moment I know it's a special equation. It's a common factor. Sorry, I'm lost in my mind here. So if there is a common factor, the moment we can solve the question. फिर तो easily हो जाएगा. ठीक है. Question type of question fixed. How many combinations are possible? The first value of A will be 0, but A is not defined because there have to be some animals. So first possible value is 5, 15. The x will have to be 1. So 5 and 1 is my first combination. Then next one will be 10, 30, but it is more than 20. So there is only one combination possible, which is 5 and 1. There are 5 animals, which are 5 aliens, which are 3-fingered, and 1 animal which is 5-fingered. So one possible combination. Next kind of question. Find the possible value of 3. 3a plus 5b total 20. Find the possible number of 3-fingered animal. Can you put an option and check? उसने क्या बोला? Find the possible value of a. A can be 6, 3, 1 या 5. चारों में से एक तो आ ही आएगा. So I can put 6, 6, 3, 18, 18 and 5 not possible. Put 3 and 3 to 3, 9 not possible. 1, 3, 5 not possible. 5 possible. तो मतलब जो 4 क्वेश्चन थे आपके पास, 4 में से 2 क्वेश्चन लास्ट का था फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी. वो तो ऑप्शन से हो जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग, द मोमेंट यू गेट अ क्वेश्चन, चेक आउट कि करना क्या है, आपको निकालना क्या है. फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए. फिर तो ईजी हो गया. फिर तो फटाफट ऑप्शन डाला, सॉल्व वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, जो भी निकालने को आ गया. आई कैन यूज ऑप्शन एंड सॉल्व. आउट ऑफ 4 क्वेश्चन वी डिड अर्लियर, 2 क्वेश्चन आर ऑप्शंस. Third question and second question, first question. Find the possible combinations. For that, I have to check whether they are factors or not. The moment I know there are common factors, I can easily solve that. The moment I know there are no common factor, then go step number 1, step number 2, step number 3, step number 4. Even if you use your steps, you can solve that question within 2 to 3 minutes, which is good enough time for CAT and CMAT. If you are able to solve a question within 2 minutes or 3 minutes, it's good. Lagao. Or I can answer. Fine. So your objective is to solve that question. Okay. So look at the options first. Try to solve the 2 questions from options. If there is no option can be used, then go and do the factor thing. If the scale no factor is common, then do the normal calculation. Okay.
Alright, how many, find the possible value of 5-fingered animal. Yep, so again same equation, 3a plus 5b is 20. All I have to do is I have to put the value of the options here. 6 into 5 is already 30, which is more than 20, so out. 5 into 3 15, 15 minus 20 is 5. 3a is 5, will not give you an integer value, out. We put b as 1. 5 as 15, 15 divided by 3, yes, possible, so my answer is 1. So the moment I get the value of finding the number of x, possible value of x, possible value of y, I can easily use options. Yep. So out of 4 questions, 2 questions are gone. Alright. Again, same kind of question. You can do all this question now. You can try this question afterwards. Alright. I want in this question, you can just make the equation for me. इसका अगर आपका equation ठीक बन गया तो पार्टी होगी. इसका equation कर दो, बहुत हो जाएगा. It's not that easy question by the way. This was CAT का question earlier, 2010 में, 2 साल पहले. 8 times my date of birth, so let's say D. 15 times my month, 15M. 769. But there are 2 conditions to this. Date of birth, date cannot be more than 31. So day have to be less than or equal to 31 depending on the case. अगर वो लीप ईयर है, अगर वो सॉरी फेब का मंथ है तो कैन बी 28, 29 कैन बी एनीथिंग. अगर वो जैन है तो 31 आएगा, फेब है तो 30 आएगा. सो ऑल द केसेस आर पॉसिबल. ठीक है. मंथ हैव टू बी लेस देन और इक्वल टू 12. Fine. So you have to choose the value which are m का value have to be less than 12. 0, 1, 2, 3 up to 12. Sorry, 0 भी नहीं आएगा और 13 भी नहीं आएगा. So have to be between 1 and 12. Fine. That's the only thing you have to check when you are solving the question. बाकी सब कुछ सेम रहा. ठीक है. इसमें स्टार्ट क्या करोगे? I'll start by dividing everything by 8. जो भी नॉन फैक्टर बचा उनको अलग कर दो, इक्वल टू के डाल दिया. के करके आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ के. सॉल्व. ट्रस्ट मी, दिस इज सबसे घटिया टॉपिक है ऑफ योर एग्जाम्स. फाइन. दैट्स व्हाई आई वांट यू टू गो होम एंड इन्वेस्ट सम टाइम इन दिस सो दैट यू आर कंफर्टेबल. अदरवाइज इट्स इजी. एक बार प्रैक्टिस करने की बात है यार. इट्स अ प्योर फॉर्मूला बेस्ड. फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो. अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ आ गया, last question, 5 minutes. Let's not solve this question. Let's understand this question. How many 3-digit numbers are possible that leaves a remainder of 4 when divided by 21 and leaves a remainder of 8 when divided by 13? How many 3-digit numbers are possible? I'll help you out. When divided by 4 leaves 21 in remainder. तो मतलब एक नंबर आ गया तुम्हारा 4 times n plus 21. 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर ऑफ 5 लीव्स और रिमाइंडर सॉरी 21n plus 4. सेकंड बार लीव द रिमाइंडर ऑफ 8, so 13m so these are your 2 different numbers, sorry same number. पहले तो मेरे को ये बताओगी हाउ टू फॉर्म अ स्पेशल इक्वेशन आउट ऑफ दिस. This equation is equal to this equation. This because number तो same है. So all I have to do is I have to put this equal to this. So 21n, 13 I take that side, minus 13m is equal to 8 minus 4, 4. That is my equation. I have to put my equation into this. आगे का normal solve same thing. Alright, that was the tricky part. We have to equate the 2 equations. दोनों को equate करके then you will get the special equation. दिस इज बियॉन्ड. ये बहुत आगे का हो गया, एडवांस स्टेज हो गया. इतना टफ तो कैट में भी नहीं आएगा. दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड द कैट का लेवल, बट स्टिल यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. एक बार ये बन गया, उसके बाद फिर वही सब डाल के डिवाइड एवरीथिंग बाय 13 फटाफट करके अपना आंसर निकलाएगा. ऑलराइट, कोएफिशिएंट का स्मॉलेस्ट नंबर 13 डिवाइडेड बाय 13 एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let me just summarize everything. Some special equation is the question where you have to find the possible number of combinations. ठीक है. When we reach the advanced stage, which will when we do CAT का thing, CAT का जो 2007 में question था, there are some chocolates which have to dividing people in such a way that some people get 1 chocolate, or you get 10 chocolates, or you get 100 chocolates.
Total number of chocolates I have is 107. Yeah, let me rephrase the question. There are some 1 rupee coin, some 10 rupee coin, some 100 rupee coin. Total money I have is 107 rupees. Find the possible combinations. अभी तक हमने 2 का किया. Now I'm giving you 3 वाला केस. ये अभी नहीं करेंगे, बाद में जाकर करेंगे एडवांस लेवल पे आके. अभी के लिए जैसे बनाना कैसे वो आना चाहिए. इसको कैसे करोगे? I can put 1 2 3 and check. वो तो आता ही, वो तो सबको आता है, वो तो कोई भी कर लेगा. If I want to use the special equations, how to solve this thing? How to solve this thing? Put this as 1. इसको निकाल दो. Use your special equation to solve this. फिर इसको निकाल दो. Use your special equation to solve these two. Then इसको इग्नोर कर दो. Use your special equation to solve this. 3 अलग अलग केस आएगा, फिर सॉल्व करेंगे ना. वो शॉर्टकट बात की बात है. बट दिस इज अ आइडियल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई एम हियर टू गिव यू शॉर्टकट फॉर लास्ट 20 साल का कैट का पेपर. विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन विद अ शॉर्टकट. बट अभी नहीं. राइट नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न एवरीथिंग. ठीक है, एक बार ये समझ आ गया ना, पेपर में कुछ भी आ गया यू कैन सॉल्व. फाइन. सी सॉल्विंग अ क्वेश्चन यूजिंग ऑप्शन इज सबसे घटिया मेथड. यू कैन ओनली गेट 5 क्वेश्चन राइट आउट ऑफ 20 कैट का क्वेश्चन बाय यूजिंग ऑप्शंस. बाकी 15 के लिए तो बेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट द शॉर्टकट एज ऑफ नाउ. आई टीच यू शॉर्टकट. मैं हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर स्पेशल इक्वेशंस.